Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So I hope you are aware, from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis, and today is 21st November, that is Tuesday, and we are here with the Hindu analysis of Tuesday. So let's start with today's article. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay. So the first is governor cannot withhold repassed bill, says Supreme Court. The next is China is the biggest security anxiety for India and Australia. So these two are important articles. एक और है OpenAI के CEO का हटा दिया गया. So the CEO of OpenAI, which has actually developed ChatGPT, GPT-4, etc., has been fired and all. So this has been in the news. We will discuss this. गवर्नर कैनॉट विथहोल्ड. विथहोल्ड का मतलब पहले आपको समझना है. विथहोल्ड का मतलब होता है, जनरली वी बिलीव कि विथहोल्ड मतलब पॉकेट वीटो नहीं. विथहोल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट द एसेंट, नहीं रिजेक्ट कर देना. रीपास सेज सुप्रीम कोर्ट. ओके, so court agrees with the Tamil Nadu government argument that the constitution does not provide Governor Ravi the discretion to withhold the 10 bills it reenacted or referred them to the president. देखो एक्चुअली होता क्या है, I have told you article 200 has talked about in detail that when a legislative assembly passes a bill, and if there is both legislative assembly and legislative council in that state, it passes a bill, it goes to the governor. So governor can do what? क्या क्या कर सकता है? Either he can withhold assent. Withhold assent मतलब रिजेक्ट कर देना. Second, resend back, है ना. और तीसरा क्या है? पॉकेट वीटो जिसको कहते हैं. However, it is not mentioned in the constitution itself. Withhold, resend, then send to president, है ना. लेकिन अगर वो resend कर दिए, so the governor can resend the bill back to the legislative assembly. एक ये provision होता है कि legislative assembly pass the bill, send to the governor. Governor sends it back. But please be aware, money bill cannot be sent back. Money bill cannot be sent back. Okay. So let's say the governor has sent back. The constitutional provision says that if legislative assembly passes it again, then governor is supposed to sign it. Okay. तो अगर दूसरी बार legislative assembly ने भेजा तो गवर्नर को साइन करना ही होता है. So that is what the Supreme Court has said, that governor cannot withhold the repassed bill. जब दोबारा second time when the legislative assembly is passing it, the governor cannot reject it. Okay. Yes, that is what it is. But the issue is there is no remedy. Remedy in the sense, ये last class में हम लोगों ने पढ़ा था, that there is no, first of all, timeline. The governor is supposed to sign in this time, 1 month, 2 months, 6 months, like that. Second thing is, if governor do not follow it, then there is no any other provision, there is no other solution. अगर governor ने मान लो reject कर दिया, जैसे legislative assembly ने second time भेजा, so it sent it second time to the governor. And if the governor rejects it, ideally he is not supposed to reject it, but if the governor rejects it, then there is no provision in the constitution to change that. तो ये एक मसला है कि अगर उस केस में कोई provision है बचा हुआ नहीं. So that is what the Supreme Court judge has said. The Chief Justice has said that Supreme Court took note of the Tamil Nadu government's argument that the constitution does not provide the governor discretion. मतलब होता है, discretion means governor acting on his own without the advice of Council of Ministers. Without the advice of Council of Ministers. Council of Ministers मतलब Chief Minister and his ministers. मंत्री परिषद समझ लो. So to withhold the 10 bills repassed by state legislative assembly, मतलब ये है कि if the legislative assembly has repassed it back, it is sending it for the second time to the governor. Governor cannot reject it. He is supposed to sign it. Once they have been repassed, these bills are put in the same footing as money bill, then you cannot reject it. Chief Justice said, heading a 3-judge bench. ठीक है, Article 200 we have discussed it a lot of times. That is what you should be knowing about it. ठीक है. But at one point, the Chief Justice asked whether the governor had to mandatorily send the bills back to the House for reconsideration after the withholding assent. Can he simply sit there say I am withholding assent without sending back and all? मतलब ये कह रहे हैं कि if the governor wants to reject it, it should reject it on the first place. पहले ही reject कर दे, है ना, ऐसा भी. So that is what it is. These are the things being talked. खैर, ये हम लोगों ने पहले already discuss कर लिया Article 200 में. So that is what he is saying, that if governor, है ना, wants to reject it, he should reject it in the first place. Why sending back again and then getting it again and then rejecting it? So that is what it is. The next is China is the biggest security anxiety for India and Australia. Actually, क्या हुआ recently? So Australia's the deputy prime minister, who is a defense minister also,
है ना. Deputy Prime Minister is also the Defense Minister of Australia, Richard Marles, and Foreign Minister Penny Wong was in India. So India और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 डायलॉग मीटिंग हुई. ठीक है. So 2+2 मतलब वही Defense Minister and Foreign Minister from one side and Defense Minister and Foreign Minister from other side. इसको 2+2 कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ना फोटो में. So 2 from here, 2 from here. ठीक है. 2 from India, 2 from Australia. है ना. So Defense Minister and Foreign Minister from one side and from other side. ठीक है. Sir, what is the difference between Council of Minister and Cabinet Minister? Okay. Council of Minister, someone is asking, sir, what is the difference between Council of Ministers and Cabinet Minister? Council of Ministers में सारे मिनिस्टर्स आते हैं, ऑल मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, या अगर स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर. ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर का एक सबसेट होता है. ठीक है. So that is the subset of it. What do you mean by that? सारे ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे नॉट बी कैबिनेट मिनिस्टर, इसलिए कि और भी मिनिस्टर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS. सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट ही और शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैबिनेट. ठीक है. और एक बहुत सारी चीज होती है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये सब उतना एग्जिस्ट नहीं करते हैं आज के जमाने में. ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया दैट कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस सम अदर्स आर आल्सो देयर that constitute council of ministers. ठीक है. So, सिर्फ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं, उसके अलावा भी मिनिस्टर होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री में जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं. ठीक है. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बहुत और भी बहुत कुछ होते हैं, उतना आपको नहीं जानना है, बट करेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज फेमस. सो दीज टू आर एक्चुअली सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ लार्जर ब्रॉडर टर्म एंड कैबिनेट मिनिस्टर इज अ स्लाइटली नैरोअर टर्म. इस तरह समझ सकते हो. ठीक है. Okay, that is what it is. Then IRB Jawan among two killed in ambush by armed miscreant in Manipur. I hope you are aware. Indian Reserve Battalion Jawan as a part of police personnel. They died actually in this attack and all. So basically, I hope you are aware. This is Manipur. This is Manipur. The capital is Imphal, and this is the place. What we call it as Kangpokpi district. Okay. So that is what you should be knowing here. Actually, an unfortunate incident happened where 2 jawans have been killed and all. So just know it now. इसको एक बार पढ़ लेना. These things we have been following it for the past many days and all. Okay. The next one is एक और article थी विशाखापट्टनम में. So actually here you will find the Andhra Pradesh, and here is Visakhapatnam. Okay, so it is going to be the capital of Andhra Pradesh, है ना. So you must have seen actually almost around 45 boats got gutted. Actually कोई आग लग गई थी जिसकी वजह से almost 45 boats got burnt and all. So it was in the news. Just have an idea about that. Then I hope you are aware this news is coming in. In 𝗟𝗏𝗀 rescue team managed to install 6-inch pipe to send food. देखो आपको पता होगा शायद कि यहाँ पर उत्तराखंड है. This is 𝗟𝗏𝗀 where actually for the past 7-8 days actually almost around 40 actually personnel or that were actually involved in tunnel digging, and they are actually stuck because of landslides and all. So this guy, I mean this person is Arnold Dix. आप देख रहे हो इनको बुलाया गया है. He is international tunneling expert and he is from Australia. ठीक है. इनको बुलाया गया है to actually inspect the tunnel collapse site in 𝗟𝗏𝗀 on Monday. Okay, so ये news भी आ रही थी. Who is Professor Arnold Dix? So this is the person from Australia, and he's an expert in actually underground tunneling and all. तो उनको खास कि वहां से बुलाया गया है so that he can give some suggestions and solve this problem and all. Yes, almost around 41 workers are trapped since November 12. So 8-9 दिन हो गया है ना. Spotlight into Professor Arnold Dix. He is a globally acclaimed expert in tunnel safety and disaster investigation, and is the forefront of the complex rescue mission. So he has been invited, called to take help and all. So we hope that things would be better and they all will come out safely. So in 2011, he received this award also, Alan Neilan Australasian Tunneling Society Biannual Award for Excellence in Tunneling. तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी जीता हुआ है टनल सेफ्टी से रिलेटेड, टनल रिसर्च से रिलेटेड. तो इन्होंने कहा भी है, आई वाज रीडिंग समवेयर दैट ही सेड दैट these are the people are stuck inside the tunnel will come out very soon and all. इस तरह का उन्होंने कुछ कहा भी है. So we hope that yes, things would be better. Okay, yes, let's move on further. So this is where we are running a CLAT crash course free session on our YouTube as well as app on the same YouTube channel in which I am teaching.
at 9 p.m. for 2024. So those who are attempting 2024 this year, we are running this CLAT crash course. Okay, so National International Awards, Science and Technology. I have done it, so go and watch it. That would be very, very beneficial for you. I have discussed about different awards and all, and science and technology related things, because nowadays they are asking questions from science and technology as well. Okay, as we are aware, as you are aware of all AIOM, All India Open Mock Test. So this is the 4th All India Open Mock Test, and the analysis will be doing on 25th November, 11 a.m. in the morning. So do join it. That would be very, very beneficial for you. Okay, and this is 2025 course. If you are planning for next year, and if your friend or junior is planning for next year, he or she can go for it. Call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो, and you can get up to 90% scholarship if you qualify this test. Okay, so 26 November 11 a.m. in the morning we'll be having a scholarship test. If you qualify it, you will get up to 90% off in this course. Okay, and this one is 12 months to CLAT and all. 2nd December को 6 p.m. पे we'll be having a session with Nivedita ma'am. CLAT 2025, 12 months to CLAT. So go for it. So download our app, go to CLAT section, and you can attempt this. You can watch this. 2nd December, 6 p.m. Okay, let's move on to editorial, Making Sense of Employment Challenge. Now he's talking about Mr. 𝗟𝗏 Balakrishnan. He's an economist, and he's talking about this, Making Sense of Employment Challenge. Now, by proposing the Indians work longer to achieve a larger national output, the Mr. Narayan Murthy, the founder of India's economic business house Infosys, has issued something akin to challenge and all. Fair. आपको पता होगा recently Mr. Narayan Murthy has said something that we should be working 70 hours a week and all. So a lot of criticism also happened. Some people supported it also. So there have been a lot of things regarding it. We have seen a lot of critical articles coming in the Hindu newspaper. So to strengthen his case, he was pointed out the experience of Japan and Germany and all. So he said that in Japan and Germany, people worked very hard, and that is why they are actually better and all as far as economy is concerned. Can Indians simply choose to work long hours to replicate their experience or not? This is not obvious. So actually होता क्या है? That is what he is saying. इसमें काफी डिबेट हुआ था क्या वर्किंग आवर्स ही काफी होता है, एनफ होता है अगर जीडीपी बढ़ानी है. Is that enough? There can be other reasons also. So for example, he's quoting Keynesian economics. देखो Keynesian economics बहुत famous है, and it talks about aggregate demand. Total spending in the economy strongly influences economic output. So basically, whatever is the aggregate demand in the economy depends upon, it lays linked to the economic output and inflation. ठीक है? So aggregate demand को ही GDP से refer किया जाता है कई बार in Keynesian economics. Keynes was a very famous actually economist. So इन्हीं के नाम से Keynesian economics कहते हैं. ठीक है? We know that output is determined by aggregate demand, which is the demand of the total volume of goods and services produced in economy. तो यही ना GDP को ऐसे डिफाइन करते हैं. Aggregate demand मतलब if the demand is less, है ना, the goods and services production will be less, है ना. The demand of labor is entirely dependent on the demand. Okay. अब देखो जब किसी चीज का डिमांड होगा, मान लीजिए कोई XYZ आउटपुट है, इसका जब डिमांड होगा, when there will be more demand, then also so there will be more production. So then only there will be more labor demand. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार की डिमांड बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल बता रहे मार्केट में. So when there is more demand of car, manufacturing of car will increase. Yes or not? Manufacturing बढ़ेगी गाड़ी की, इसलिए कि डिमांड ज्यादा हो रहा है. So when manufacturing increases, what will happen? तो नया प्लांट्स खोला जाएगा. New manufacturing plant of car will be set up, so it will create more jobs. है ना? Yes, it will require more labor, है ना? तो ये इससे linked है. That is what he is saying. कि labor की requirement demand से linked है. You understand it? When there is more demand of anything, then only the more manufacturing will happen, and then only the more labor force is required. समझ गए ना? अगर किसी चीज की डिमांड होगी तभी ना वो चीज प्रोडक्शन में ज्यादा आएगी, और तभी तो उसके लिए लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी. दैट इज व्हाट ही इज कनेक्टेड है. फर्म्स दैट एम्प्लॉय मोर लेबर while aggregate demand has not increased will find themselves with unsold goods. जाहिर सी बात है, आपको कंपनी है उसका सेल डाउन हो रहा है, मतलब किसी भी कारण से लोग की डिमांड घट गई उसमें, तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे. देन ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना. तो इसको लॉन्ग आवर से इसका कोई मतलब उतना नहीं है शायद. Okay, firms are guided by the profit motive and will employ more labor only if there is increased demand for their product. Yes, of course, जब ज्यादा डिमांड होगा इस प्रोडक्ट का, तब ना
उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, है ना, एंड देन दैट कंपनी विल हायर मोर, है ना. सो अनएम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट्स जस्ट दैट वर्कर्स विलिंग टू वर्क बट फर्म्स अनविलिंग टू एम्प्लॉय देम. हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का एक और कारण ये है कि लोग तो चाहते हैं काम करना, ठीक है, पीपल आर विलिंग टू वर्क, दे वांट जॉब्स, बट जॉब इज नॉट प्रेजेंट, कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब्स, या कंपनी को जरूरत नहीं है तो नहीं हायर करेंगे वो. ओके, सो दिस इज एन इशू दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, कि अगर कोई बंदा तैयार भी है कि हमको हम मेहनत करने को तैयार है, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एंड ऑल. ओके, सो लेट्स से समवन इज अ लेबर एंड ऑल, बट स्टिल ही इज नॉट, ही और शी इज नॉट गेटिंग जॉब, तो फिर उसमें वो क्या करेगा उतना, अगर, है ना. सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 वगैरह आया, so a lot of technology companies like जैसे Google, Amazon का example दे रहे हैं, they hired a lot of people because they required, and after this COVID is over and all, they did not require, वो सब goods and services का demand खत्म हो गया, so the demand of those type of goods and services went down, and because of which they fired and all. So यही सब वो बता रहे हैं, these are the things is talking about, ठीक है. So बहुत हद तक basically is talking about कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कि 70 hours वर्क करने वाले लोग होने चाहिए, there has to be a demand in the economy, है ना, then only labor or job will be created and all, है ना. Then he's talking about post-war years, यानी World War II के बाद, and actually nothing demonstrates the role of demand for labor service being crucial determinants of working than the history of these economies. जैसे World War II खत्म हुआ, we needed a lot of structure, है ना, we needed a lot of construction, so for that the labor demand increased, है ना. जब World War II खत्म हुआ तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था, तो उसके लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो गई, तो फिर लेबर्स की जरूरत पड़ेगी. In that case, I mean, है ना, in that sense, labor was required and all. अच्छा, एक प्लान है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी फेमस हुआ था. What is that plan called? So please read it carefully and then answer it. सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. Everyone, please press the like button, share this video and subscribe to our channel. Officially, the European Recovery Program was an American initiative enacted in 1948 to provide foreign aid to Western Europe. The US transferred $13.3 billion in economic recovery program to Western European economies after the end of World War II. ये कौन सा प्लान था, बहुत फेमस है ये सैफी नौमानी गौरी सेठी राइट, हाँ, मार्शल प्लान कहते हैं. ये यूएस का बहुत फेमस प्लान था. सो इट वाज एक्चुअली द प्लान टू कंस्ट्रक्ट द वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, दीज रीजन्स, है ना. सो एक्चुअली ये था, सो दैट्स कॉल्ड एज मार्शल प्लान. उसके काउंटर में जो ये यूएसए का प्लान था, तो यूएसएसआर का उसके काउंटर में जो प्लान था उसको मोलोटोव प्लान कहते हैं. लेटर ऑन इट बिकेम कॉमेकॉन, या इसी को CMEF भी कहते हैं, ठीक है. ओके, तो ये मोलोटोव प्लान था, लेटर ऑन बिकेम कॉमेकॉन एंड ऑल, ठीक है. सो ये यूएसएसआर का प्लान था कि ईस्टर्न यूरोप जो था ना, इट हैड एक्चुअली इन्फ्लुएंस ऑफ, यू कैन से the USSR, जैसे आज का यूक्रेन वगैरह है ना, टुडे मॉडर्न डे यूक्रेन, पोलैंड, दे हैड इन्फ्लुएंस ऑफ USSR, ठीक है, एट दैट टाइम. इसलिए पूछा भी था सवाल है कि 1991 से पहले यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ, सो आंसर इज USSR, है ना. दिस वाज आस्क्ड इन CLAT 2021, आई गेस 22, है ना. So this you should be knowing about it. So the right answer is B. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗥𝗲𝗀 you all are right. Marshall Plan is the right answer. पता होना चाहिए. Though it was not mentioned by Narayan Moti, he is again talking about South Korea also. तो जैसे साउथ कोरिया हो गया है ना, एशियन टाइगर्स इसको कहते हैं, एशियन टाइगर्स इकोनॉमी में साउथ कोरिया, जापान, है ना. सो दे हैव वर्कड वेरी वेल एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन इकोनॉमी इन द रीसेंट इयर्स, है ना. So these are the things being talked about. खैर इसमें अब इतना डिटेल नहीं जानना है, nothing to go in detail. Okay, the next one is end of a dream run. I hope you are aware. Unfortunately, we lost the final match at Ahmedabad Stadium, Narendra Modi Stadium at Ahmedabad. So we lost. Actually, India ने सारा मैच जीता था, सिर्फ फाइनल छोड़ के. So basically, that is what they are talking about. Then 2 decades apart, यानी 20 साल का gap. So basically, there was another one which actually, unfortunately, we lost in 2003 also against Australia in the final. Similarly, the same thing almost got repeated in 2023. So Ricky Ponting was the prime minister, was the captain at that time. I still remember this. So they scored 359 for 2. इतना ज़्यादा उन लोगों ने रन मारा था, and in 50 over, and we got all out into 234. This is 2003. ठीक है, मार्च वगैरह की बात है, मार्च 2003 के आसपास हुआ था ये मैच. I still remember it. And अभी जो है recently भी, I hope you are aware, they defeated it again in the same fashion. So basically वही 2 decades apart, मतलब 20 साल का गैप है, लेकिन similar type incident हुआ जिसमें वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया.
So that is what they're talking about at that time, Ricky Ponting. And this time Pat Cummins was the captain of Australian team. उस टाइम पर कैप्टन जो थे इंडिया के सौरव गांगुली थे, and now this time it's Rohit Sharma. Okay, so this you should be knowing it. And so these are the things being talked about. Okay, so we played very well and all. Yes, he's talking about Travis had played very well. These are the things you should be knowing it. है ना. साउथ पा समझते होते, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो कहते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटर को साउथ पा कहते हैं. ठीक है, 137 विल बी स्पोकन अबाउट फॉर लॉन्ग. 137 मार दिया, है ना. सो इट्स टॉकिंग अबाउट द इनिशियली जब था ना, इनिशियल डेज में ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस टीम नहीं थी. शायद आपको पता होगा, वेस्ट इंडीज वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल टीम इन द इनिशियल डेज ऑफ वर्ल्ड कप. ओके, और शुरू का 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज नहीं जीता था. फिर बाद में जब एलन बॉर्डर वाज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया व्हेन इन 1987 ऑस्ट्रेलिया वन फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. यू कैन सी इट हियर. फर्स्ट जो मैच था 1975 ना, 75 में जो पहला हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कप हैपेंड इन 1975 इन इंग्लैंड एंड इट वाज वन बाय वेस्ट इंडीज. देन अगेन वेस्ट इंडीज. शुरू में वेस्ट इंडीज बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी. ओके, देन 1983 वी वन इट. देन ऑस्ट्रेलिया में 1987 द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया वन अंडर एलन बॉर्डर. ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जीता, श्रीलंका, फिर ऑस्ट्रेलिया, 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 देन इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंग्लैंड. ओके, नाउ इफ यू सी इट केयरफुली, सबसे पहले मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑस्ट्रेलिया हैज वन 1 2 3 4 5 टाइम्स, है ना. सो 5 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया हैज वन. एक चीज हो गया. दूसरी चीज है जो कि पूछा जाता है वो ये है कि 1983 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फाइनल मैच. 1983 में इंडिया ने किसको हराया था और 2011 में इंडिया ने किसको हराया था वर्ल्ड कप जीतने के लिए. कैन एनीवन टेल मी? या जो है द हिंदू वाले क्विज देते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था. एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर इट. तो 1983 द कैप्टन वाज मिस्टर कपिल देव, है ना. एंड हियर द कैप्टन वाज MSD, महेंद्र सिंह धोनी. सो व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन? 1983 में इंडिया डिफीटेड विच कंट्री, विच टीम, एंड 2011 में इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द वर्ल्ड कप. ये फेमस ही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, अभी वर्ल्ड कप न्यूज में ये सब पूछ लेंगे घुमा फिरा के. अगेन वेस्ट इंडीज को ही हराया था. ठीक है, हाँ 2011 में श्रीलंका. यस, साफी रोमानी राइट. हाँ, इन 2011 इंडिया डिफीटेड श्रीलंका टू विन एक्चुअली द फाइनल एट वानखेड़े स्टेडियम. मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, उसमें वो लास्ट जो 6 मार रहे हैं, लास्ट 6 which was hit by महेंद्र सिंह धोनी. I had shown in that YouTube shorts. Have you watched that YouTube shorts which I am talking about Sachin Tendulkar? है ना, I have made that YouTube shorts. 1983 में जो इंडिया ने हराया था वो वेस्ट इंडीज को हराया था. ठीक है, so you remember that. These two are very important. This can be asked in the exam. जो पास से सवाल उठाते हैं ना कि पहला वर्ल्ड कप किसने जीता 1975 में, तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा भी वेस्ट इंडीज ने, तीसरा इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया. सो दीज आर द थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, दे माइट आस्क. खैर, a fact checking unit that is unconstitutional. This is a lawyer of Madras High Court. He is writing about a fact checking unit. So he is actually criticizing this. इसमें है क्या कि recently a government of Tamil Nadu has come up with fact checking unit with the intent of checking across all media platforms authenticity of information relating to government of Tamil Nadu. But he is criticizing it. He is saying कि unconstitutional है, vague है और arbitrary है. Okay, and he is saying that recently government of India has also come up with this information technology rules and all to check false, misleading information and all. तो अब उसमें ये बता ही रहे हैं, मतलब इनका जो 2-3 कहना है वो मैं बता देता हूँ. First is he is saying Article 19 talks about freedom of speech. There is reasonable restriction agreed in Article 19 clause 2. He is saying, but yes, he is saying that this might be misused और ये independent agency नहीं है. जैसे for example, so the fact checking unit should be independent of government. This is first he says. Okay, and second thing is he saying कि हाँ अगर इससे क्या होगा कि this might curb freedom of speech and expression. That is what the author is saying. ठीक है, set up a fact checking unit to identify fake, false or misleading information and all. ठीक है, it was challenged in Bombay High Court and all, and the High Court, the government of India gave an undertaking that the fact checking unit will not be notified until the judgment. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है, इसको हम तब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाए, देन ओनली वी विल इम्प्लीमेंट दिस गाइडलाइंस, है ना. और
ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज है, जैसे इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट ही इज सेइंग दैट द वर्ड पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन इन 19 क्लॉज 2। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये सब वर्ड लिखा हुआ है, जैसे लिखा है सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर इज मेंशनड but public interest word is not mentioned and this might be misused and all। तो ये वो बता रहे हैं कि इसका हो सकता है मिसयूज कर ली जाए। सेकंड थिंग इज इट सेड दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये लिखा हुआ उसमें। नाउ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली, तो वो वेग है एक तरह से कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु क्या मतलब हुआ, इसको डिफाइन कीजिए प्रॉपरली। सो मींस ही इज सेइंग दैट इट माइट बी मिसयूज्ड एंड ऑल। थर्ड थिंग इज सेइंग, वही वो बता रहे हैं कि द गवर्नमेंट विल बिकम जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर ऑफ द ऑथेंटिसिटी। देखो होता क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपने सुना होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे जॉन लॉक का दिया हुआ है, देन मॉन्टेस्क्यू वगैरह फ्रेंच स्कॉलर्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ऑल थ्री वर्क डिफरेंटली, मींस इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव और जज दोनों जो है सेम एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दिस इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। मतलब क्या है कि मतलब कहने का मतलब कि फैक्ट चेकिंग यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी सम इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी, should not have influence of the government and all, that is what he means to say। एक independent body होनी चाहिए इसको regulate करने की, because it might be used to unnecessarily regulate some journalist and all, a comedian or satirist, हो सकता है ना कि that might be misused and all, that is what he is saying। खैर हाँ, article 50 mentioned be good, so that is what he is talking about, है ना। फिर ऐसा ही concept होता है, एक misinformation होता है, एक disinformation होता है। what is the difference? So go and find out this information, misinformation, फर्क ये होता है, one is intentionally spreading wrong information, another one is unintentional। एक होता है जानबूझ फर्जी न्यूज फैलाना, एक होता है कि mistakenly wrong न्यूज चले जाना। So go and find out the difference between misinformation and disinformation, ठीक है। So these are the things being talked about। तो बताइए नहीं कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए which can regulate Facebook, X, Google, हाँ रेगुलेशन की तो जरूरत है ऑफ कोर्स, बिकॉज समटाइम्स अ लॉट ऑफ केसेस वेयर एक्चुअली इन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस देयर आर थिंग्स व्हिच शुड नॉट गो इन द पब्लिक एंड इट गोज एंड इट इज रिवील्ड इन द पब्लिक एंड ऑल। तो जैसे यूरोपियन यूनियन ये सब चीजें बहुत आगे होता है, मैंने आपको बताया भी है ना। आई हैव टोल्ड यू दैट एक्चुअली यूरोपियन यूनियन इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्राइवेसी एंड ऑल, ये सब चीजों में भी यूरोपियन यूनियन काफी स्टेप्स लेते हैं। यूरोपियन कमीशन इशूड कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन, है ना। So these are the things being talked about। देखो दोनों जो होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वन इज डन विद इंटेंशनल पर्पस, अनदर विद अनइंटेंशनल पर्पस, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। गो एंड फाइंड आउट। एक साइड में आर्टिकल थी अर्जेंटीना का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, ठीक है ना। सो बेसिकली लेट मी शो यू, हियर इज इंडिया, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अर्जेंटीना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? ब्यूनस आयर्स, है ना। एंड आई थिंक करेंसी इज पेसो, है ना। तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम बहुत फेमस है, आई होप यू आर अवेयर, अ वेरी फेमस फुटबॉलर इज फ्रॉम देयर। एक फेमस फुटबॉलर, उनका नाम बता सकते हैं? फुटबॉलर फ्रॉम अर्जेंटीना, वेरी फेमस वन। खैर तो ये इलेक्शन हुआ, दिस इलेक्शन हैपेंड बिटवीन जेवियर मिली एंड सर्गियो मासा एंड ही वन इट एंड 55.69% वोट से। ओके, so basically that is what he's saying. The author is criticizing it because he is actually an 𝗟𝗂-capitalist and all, sharp turn and all, so they are actually right towards right, so he's right wing and all, so that is what they are talking about। नाम याद रखना है, इतना ज्यादा नहीं, जेवियर मिली नाम याद रख लीजिएगा, that's it, the new prime minister, the new president of Argentina, ठीक है। okay, just remember it। हाँ, मेसी is from there, good। हाँ, अर्जेंटीना के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। ओके, सो गो एंड रीड अबाउट इट, है ना। एनुअल इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड, सो एनुअल महंगाई 140% हो गई है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन पॉवर्टी, सो देयर आर सम सीरियस इकोनॉमिक इश्यूज इन अर्जेंटीना आल्सो, है ना। पेसो इनकी करेंसी है, हैज प्लमेटेड, प्लमेटेड मतलब बहुत नीचे चला गया, एज कंपेयर टू डॉलर इट हैज गॉन डाउन, यानी बहुत ज्यादा वीक हो गई है करेंसी, हिस्टोरिकल लो पे। डॉलर इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1000 पेसो, यानी 1 डॉलर जो है 1000 पेसो के बराबर है, मतलब बहुत ही खराब हाल में पेसो। एंड फ्रॉम 80 पेसो वाज इन द अर्ली 2020। सो पहले 1 डॉलर 80 पेसो के बराबर होता था 2020 में, ओके। एंड नाउ टुडे इज 2023,
$1 is 1000 peso. Can you imagine how weak the currency of peso has become? कितना कमजोर हो गया. Okay, so that is what they're talking about and all. ठीक है. So these are the things. तो इसमें ये है कि economic crisis है, तो अब ये इन पर challenge है कि whether he will be able to handle that effectively, that economic crisis or not. That's the thing. Okay, a renewed focus on emerging technologies. Again वही artificial intelligence की बात हो रही. Emerging technology से सवाल आने की probability है ना. So OpenAI, artificial intelligence and all. So they are talking about artificial intelligence in military है ना. जैसे चाइना किया डिफेंस डायलॉग में आर्मी चीफ टॉक्ड अबाउट इट. उड़ान एक इनिशिएटिव है. इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, वर्चुअल रियलिटी टू एड्रेस ऑपरेशन है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, वर्चुअल रियलिटी वगैरह भी होता है. इसमें ये हेल्पफुल होगा आई थिंक पायलट की ट्रेनिंग में, आई गेस है ना. तो ये सब चीज जो नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, दीज आर कमिंग इन. इंडिया हैज लॉन्च्ड GSAT-7 सैटेलाइट, स्पेसिफिक सैटेलाइट फॉर देम है ना. तो सैटेलाइट लॉन्च करने से, अगर इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होता है ना. जैसे आपने सुना होगा नाविक, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. नाविक इसको कहते हैं, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन. इसका दो एस्पेक्ट है, एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है ना, और एक ओपन टू ऑल है ना. तो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस इज SPS कहते हैं इसको. सो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस इज ओनली फॉर मिलिट्री पर्पस है ना. तो मिलिट्री को नेविगेशन में हेल्पफुल होता है. सो सैटेलाइट्स आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर नेविगेशन, मूवमेंट ऑफ मिलिट्री प्लेन्स, एयरफोर्स प्लेन्स, मिलिट्री लेट्स से टैंक एटसेट्रा एंड ऑल. ठीक है. ओके, अब देखो ये एक क्विज है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. देखो ये सवाल था कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप किसको हरा के जीता था. हाँ, इसमें 1983 में मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था. लॉर्ड्स में हुआ था मैच, यूएस में ना, इंग्लैंड में ना. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. हाँ, विच वाज द टीम 2011 became many of the first since 1992 वर्ल्ड कप. द टूर्नामेंट फाइनल डिड नॉट फीचर अ प्रोमिनेंट टीम. ठीक है. सो ये सब आप देखो ना, उसको ट्राई करना, गो एंड फाइंड आउट एंड आंसर इट. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. एंड इफ यू नो ऑल द आंसर्स, तो अंदर आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इट इन द कमेंट. क्वेश्चन 1 करके लिखना आंसर, 2 करके आंसर लिखना, 3 करके आंसर लिखना, 4 5 6 7 करके आंसर लिखना इफ यू नो इट. अगर सबको नहीं पता, जो पता है 5 6 7 का पता है, 5 6 7 का लिख देना. आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इट इन द कमेंट. सेंटर सेलेक्टिव ट्रांसफर अपॉइंटमेंट में ट्रिगर एम्बैरेसिंग आउटकम से सुप्रीम कोर्ट. एक्चुअली क्या है इसमें, क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड्स, कॉलेजियम रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस. तो जैसे मान लो 10 नाम दिया. So there have been some incident where actually the central government has allowed 5 judges. 5 को अलाउ कर दिया, 5 का अभी नहीं अलाउ कर रहे, साइन नहीं किया, और have not given approval. In that case, so the Supreme Court is not happy. He's saying the Supreme Court judge has said that this is selective and this is not correct and all. It may lead to embarrassing outcomes and all. So that is what it said. फिर एक और है कि Israel Hamas conflict and bombardment of Gaza could pause progress on India-US trade and all, है ना. IMEC वगैरह की बात हुई थी, मैंने बताया भी था. IMEC, सो इंडिया मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट ऐसे करके कॉरिडोर जाता IMEC. बट आई थिंक दिस विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड है ना. इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. व्हाई? द रीजन इज बिकॉज ऑफ कोर्स द वॉर इज हैपनिंग हियर इन इजराइल एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. 2+2 dialogues. So the group Houthi rebels often seen in news belongs to which country? Palestine, Yemen, Syria, Jordan. This is in the news because of some reason. And now why it is in the news? क्यों न्यूज में बताइए तो. Anyone? Yes, Yemen. So B is the right answer. Yes, 𝗟𝗏 you are right. So Yemen civil war में Houthis have been very much in the news. Actually क्या है कि there have been news कि इधर से एक इजराइल की शिप आ रही थी, and somewhere here is Yemen. So somewhere here actually they captured that ship. Seized. So ये actually I think India की तरफ आ रही थी, and this was seized by Houthi rebels and all. That is what you should be knowing it. Who control northern Yemen and its Red Sea. तो northern Yemen में इस region में I think Houthis का control है, and they have actually made hostage and all. मतलब ship को पकड़ लिया. But Israelis have said that it is British owned and Japanese operated cargo vessel. So they said कि no Israeli national is on board. लेकिन उसमें और जो डिटेल वगैरह आया है कि it has some link with the Israel and all. So let's see what will be the news. तो खैर okay. So evening of music and dance at 54th IFFI opens with a starry ceremony. Okay, please answer this question as well. The question is 54th International Film Festival Award is being held in Mumbai, Goa, Chennai, New Delhi. What is the right answer to this question?
अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस। व्हाट इज द राइट आंसर? यस, गोवा में, वेरी गुड। गौरी सेठी साफी नोमानी, यस, हाँ ठीक है। सो इट हैपेंड इन पानाजी, गोवा, ठीक है। सो अगेन विद द सेम आइडिया, वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, है ना। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। ये तो मैंने बता दिया, अर्जेंटीना वाला, द न्यू प्रेसिडेंट हैज कम अप एंड ऑल, ठीक है। Altman's exit. So actually the CEO of OpenAI has been fired, and Mr. Sam Altman, and now he has been appointed by Microsoft, ठीक है। So he's been in the news. एक और का थोड़ा सा टाइम होगा तो लैगलैंड प्रोग्राम पढ़ लेना, ये मैथ से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है। इट हैज वन एबल प्राइज ऑल्सो। एबल प्राइज इज अ वेरी फेमस प्राइज गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है। सो इन 2018, है ना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। इट रिप्रेजेंट्स एन अलजेब्रिक नंबर थ्योरी। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना लैगलैंड्स प्रोग्राम को। ऐसे प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन तो भी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सो गो एंड रीड अबाउट इट लिटिल बिट। So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.